सब्सक्राइब करो गाइस। हाँ तो छोड़ो, नहीं बात करेंगे अब। मुझे यार ये तो गलत यार। चालू मैच में आप व्हाट्सएप पे अरे बोरिंग सा लगता है टावर पे सर्वाइविंग करना। मैं थोड़ा अटैकिंग को भी रखता हूँ ना साथ में। अच्छा मुझे ये बताओ आप, सो नो दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है, बिकॉज़ जय अभी उन्होंने बताया कि ही रियली लाइक्स टू। हाँ तो छोड़ो, नहीं बात करेंगे अब। यार ये तो गलत यार। चालू मैच में आप व्हाट्सएप पे नहीं क्लैश नहीं होता। वो एग्रेसिव है लेकिन वो मैं थोड़ा ऐसा उसको नहीं है कि समझाया तो अच्छा मुझे ये बताओ आप, सो नो दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है, बिकॉज़ जय गुड अभी लिस्नर उन्होंने भी है, बताया गुड कि ही रियली लिस्नर। लाइक्स टू। हाँ तो छोड़ो, नहीं बात करेंगे अब। Like the quiet one in the team. ऐसा कुछ नहीं है। बोल क्यों नहीं रहे अभी यार? इतना आराम से मंद मंद मुस्कान लेके बैठे हुए आराम से नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, जस्ट वाचिंग। क्या हो रहा है बादशाह भाई? व्हाट्स अप? बस बढ़िया। अभी बढ़िया, बट इतने शांत क्यों? मुझे ये बताओ, बिकॉज देख आपके टीममेट से बोले अभी सागर को बहुत हंसी आ रही है कि यार बादशाह इतना शांत हुआ ना कैसे? तो आज क्या हो रहा है? आई फीलिंग अ लिटिल नर्वस? नहीं कहूँगा नर्वस नहीं हो गया, नर्वस तो पॉसिबल ही नहीं है यार। आप एमपी से तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? साइलेंस नहीं। इतना शर्मा रहे ना ये अभी। But no, jokes apart, Basa bhai, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, what's your role in this? Why don't As a you supporter. as a supporter? फिर आप, why don't you tell us more about your teammates' roles as well? जय के बारे में बताइए। जय बहुत अच्छा एंट्री ट्रैक एंड स्नाइपिंग तो आपको पता है, सब नहीं देखे उसकी स्नाइपिंग। वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स। So entry fragger के लिए आप, see, to be a good entry fragger you need to be a good assaulter as well most of the time, unless आप range से एक चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो and you're trying to create space. So he's a good sniper and he's a good assaulter. आप इधरों के बारे में क्या कहेंगे? इंद्रो भाई एज अ मतलब गुड फ्रैगर एंड उनकी शॉर्ट रेंज बहुत अच्छी। So you have both. It's a fairly balanced out team, नहीं सागर? हाँ पूरी बैलेंस टीम है। And ये दिख भी रहा है, you're one of the most presentable teams out there as well, as a matter of fact, because the way you guys have taken care of your own appearance on social media as well, आप जिस तरीके से अपने आप को present करते हो in the game, outside the game, it's wonderful to see, and this is what brands are about, right? And I'm sure Sixth Sense is going to grow as fast as possible, because मैंने जब पहली बार notice किया था आपको, that's the first thing I noticed as well, that you guys are some of the most presentable people out there.
and that's I think really important as well जब आप खुद की एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हो and you guys have been taking care of your सागर और इंद्रो के डोले तो मुझे दिख रहे हैं. I know that both of these guys exercise. जय का आइडिया नहीं है मुझे. बासा बॉय नहीं करते. बासा आप एक्सरसाइज नहीं करते ना? अभी नहीं. कभी नहीं. अभी नहीं, छूटा हुआ है मतलब लॉकडाउन के चक्कर में. यार लॉकडाउन के चक्कर में तो मेरा भी छूट गया वैसे. मैं क्या ही बताऊँ. I just ordered parallel bars. But मुझे एक बात बताओ. इंद्रो भाई आप कहाँ से हो और बाकी सारे मेंबर्स कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ. डॉटे भाई है गुजरात, दिल्ली से है. दोनों ये जय और बारका दोनों दिल्ली से. दिल्ली में कितना दूर रहते हो आप एक दूसरे से? 30 minutes. यार 8 kilometers. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है स्पेशली इन द लॉकडाउन राइट और स्पेशली व्हाइल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग कि यू वांट टू बी इन अ बूट कैंप. आपको साथ में बैठ के खेलना है बट पॉसिबल नहीं है. अ लॉट ऑफ टीम्स हैव एक्चुअली वेंट डाउन टू बूट कैंप. आप सीआरएक्स की बात कर लीजिए, आप टोटल गेमिंग की बात कर लीजिए, दे आर बूट कैंपिंग. बट ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सीआरएक्स ने कहा था, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि द रीजन व्हाई दे बीन एबल टू प्ले सो वेल इन सच अ शॉर्ट स्पैन इज बिकॉज ऑफ द बूट कैंप. तो यार इंद्र आप भी बताओ मुझे कि आपको कमी महसूस नहीं होती है बूट कैंप की? बूट कैंप इज अ बोनस. ऑब्वियसली एक एडवांटेज रहता है बूट कैंप का, बट अब तक खेल ही रहे तो देखते ये टूर्नामेंट अच्छे से निकल जाए, उसके बाद अपना टाइम भी आएगा तो फिर हम भी करेंगे. सागर भाई कहाँ पे बूट कैंप करना है? बिल्डर तो आप भी हो. बूट कैंप कहीं पे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है. डॉटर पे मेरा मेरा पेमेंट भिजवा देना बस. So looks like this, Sixth Sense is secretly owned by Sagar, but he just does not want people to know. Kind of. Kind of. बस बताओ. मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे नाम के आगे इल्लू कैसे रहेगा. इल्लू नहीं. अच्छा जय, I want to come to you and I want to ask you कि आपने पूरी टूर्नामेंट खेली, you've been playing since a while now, but मैं आपसे जानना चाहता हूँ who's your biggest competitor in the tournament. और इंडिया में अगर टीम्स की बात करें, टॉप 2 टीम्स अगर आपको सिलेक्ट करनी होती जिनके अगेंस्ट खेलने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है और आपको लगता है कि नहीं यार ये टीम के सामने हमें खेलना है बिकॉज इट्स फन, इट्स अ चैलेंज, तो दो कौन सी टीम्स होगी? CRX and Total. यार ये दो टीम्स ऐसी है सागर की, these are two of the best teams in the country. आप बात करें there are other teams as well who have a very long history. आप GCR में भी बात कर लो, they have a history. थोड़ा shaky performance रहा उनका, no doubt. It's been a little disappointing. But अगर आप बात करें exclusively Total and CRX के बारे में, तो what do you think of these two teams? Because जिस तरीके से players खेलते हैं, CRX has went out and shown super aggressive gameplay and they've been able to back it up with their firepower as well. तो should we be expecting हम लोग नहीं यार आगे जाके you might throw in a curveball as well, you might change your play style? प्ले स्टाइल तो चेंज नहीं होगी, लेकिन काफी हद तक अगर देखने जाए तो सीआरएक्स और हमारी जो स्ट्रेटजीज वगैरह जो रहती है काइंड ऑफ सेम रहती है, बहुत सिमिलर है हमारी. रोटेशंस भी सेम होगी. हाँ, और फायर पावर की बात करें तो हाँ उनके पास भी अच्छा फायर पावर है और हमारे पास भी अच्छा फायर पावर. अब उसमें फिर बस पोजीशन आ जाती है कि भाई किसके पास थोड़ा एडवांटेज और किसके पास नहीं है. बस वही एक इसके बाद कौन चला गया, किसके पास नहीं. अलग बहुत मैटर वहाँ पे करता है फाइनल में. That is true, but one thing that I've still noticed है, आपने बिल्कुल सही कहा, strategy rotations are really same, but sometimes CRX लगता है कि they just stop, they're like यार छोड़ो सब सारी चीजें छोड़ो, अब जाके बस मारना है. And we've seen them do that. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार थोड़ा बहुत see I have always been, मैं कहूँगा कि I am a little like Jay when it comes down to my own temperament while playing the game. I am not a person who can stay back or who can stay out of the action. So that's why जब जय ने कहा कि यार नहीं मैं बोर हो जाता हूँ, I resonated with it so well because मैं अभी भी कहता हूँ मैं जब फ्री फायर खेलने का मौका मिलता है ना तो I actually prefer Clash Squad over Battle Royale. उसका कारण है कि Clash Squad में तेरे इतने ज़्यादा डेड स्पॉट्स नहीं होते. वही तो मुझे ये बताओ यार इधर भाई, आप बताओ आप कौन सा प्रेफर करते हो, क्लैश स्क्वाड या बैटल रॉयल? मैं रैंक मैच ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. वहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड में ज़्यादा खेलता हूँ. क्लैश से क्या होता है सिर्फ आपका शॉर्ट रेंज. अब बातें ऐसे तो करके हम क्या ही बोले, मतलब मेरी टीम में बहुत सारे, हाँ बोलो जय भाई. मेरी टीम में सारे माइंडसेट प्लेयर्स हैं, सारे माइंडसेट प्लेयर्स हैं मेरी टीम के अंदर. हम तो सिक्स सेंस के अंदर है ना, और ये तीनों के तीनों माइंडसेट प्लेयर्स हैं. इनको आँख बंद करके रेस्ट करना इनको आते ही नहीं, पता है आप लोग.
हम आँख बंद करके ये लोग रश ही नहीं करते, जैसा मैं घुस जाता हूँ सब में। It's kind of in the name, right? Sixth sense, because ज़्यादा यूज होता है यार दिमाग. पूरा पूरा माइंड माइंडसेट से दिमाग से मार देते हैं भाई। Jay, now you can just switch off. कहते हैं ना वो हॉर्स घोड़ों को लगाए हुए होते हैं, हॉर्सेस हैव दिस ब्लाइंडर्स. हम वो लगा लेते हैं, दोनों तरफ ब्लाइंडर्स लगा लेते हैं. जहाँ पे फुटस्टेप गोली की आवाज आई, you turn to that direction and you go and pick the fight. Sometimes it's exactly that. क्योंकि यार देखो, I do believe that every player has a temperament and that's the reason why a team needs to be very well balanced. इन्होंने बहुत सही पॉइंट कहा था अभी कि आप 4 एग्रेसिव प्लेयर्स या 4 सुपरस्टार्स को लेके एक टीम नहीं बना सकते. You need a good support as well. You need a good entry flagger. You need a good caller. But talk about support, यार. Barca boy, I want to know how easy is it or how difficult is it, because I'm sure आपने बाकी प्लेयर्स के साथ भी खेला होगा. तो while being a support मुझे लगता है एक बहुत underrated रोल है, because जब आप देखते हो, नोटिस करते हो कि supports have a very specific role to fulfill. उनके numbers नहीं दिखते, but they are the enablers for the team. तो यार बाज़ भाई आप बताओ कि do you ever feel कि the support role is very underappreciated and कभी मुश्किल लगता है आपको? No, not at all. Not at all. काफी अच्छी बात है, काफी कंसाइज आंसर्स दे रहे हैं अभी, मतलब एकदम छोटे से. एंड यू नो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी. मैं सोचता हूँ यार मैं बात भाई से सवाल तो पूछना चाहता हूँ, बट जवाब भी छोटे छोटे कि भाई क्या ही पूछे इनसे, बताओ. नहीं बट मैं क्वेश्चन बारसा 10 नंबर का आंसर था, ये क्वेश्चन था. शुरू हो जाओ. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, सब कुछ कर लेंगे अभी. बट नहीं यार, आई डू बिलीव दैट सपोर्ट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक होता है एंट्री फ्लैगर का रोल जो बहुत अंडर अप्रिशिएटेड होता है, और एक होता है सपोर्ट का रोल. बिकॉज एंट्री फ्लैगर का काम कई बार मानते हैं कि उनका काम होता है एंट्री फ्लैग्स निकालना. इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. आप देखिए एंट्री फ्लैग निकाल सकते हो, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एंट्री फ्लैगर टू डू इज टू क्रिएट स्पेस फॉर योर टीम. अगर आप घर के अंदर भी रश कर रहे हो, it is Jai who draws all the fire, who creates the space for the rest of the 3 guys to move around. And इसलिए मैं कहता हूँ कि I think you have the right person, you are the most perfect person for the job. Jai will just go in. आपने अगर बोल दिया ना, कभी ऐसा हुआ तो मुझे बताओ, सागर पे आप बताओ कि कभी बोल दिया जय मार, कभी किया ऐसा? किया है ना. How did that work out? वो हो जाता है, उसको फिर सपोर्ट मिल जाता है, पर कवर अप हो जाता है, कवर अप हो जाता और है. उसने ऐसा भी हुआ है कि उसने अकेले ने 4 बंदे को लेटा दिया हो, पूरी टीम. अच्छा मुझे एक बात बस बताओ. उसको सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, बाकी वो अपना काम कर लेगा. बाकी वो अपना कर लेता है, उसको पता है उसको क्या करना है. इंद्रू भाई मुझे ये बताओ, व्हाट्स द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन एनी मैच, टूर्नामेंट और ऑफ दिस टीम जो आपको याद हो? या फॉर एग्जांपल अभी बताया कि जय ने पूरी टीम को लेटा है वो एक साथ. सो व्हाट आर सम मेमोरेबल मोमेंट्स दैट यू रिमेंबर, कोई एपिक मोमेंट्स मैचेस में से? ऐसा बहुत सारे मोमेंट्स गए हैं जहाँ पे हम लोग को कभी लगा ही नहीं कि ये हम लोग जोन पहुँच सकते हैं या बोया कर सकते हैं. ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कभी कभी, जोन आपका पूरा ऑपोजिट करता है, लेकिन वही मैच पे अच्छा रोटेशन डाल के सामने एक स्क्वाड हो, उसको वाइप आउट करके जब हम लोग बोया करते हैं ना, वो फीलिंग्स एक अलग ही होता है कि जहाँ से कुछ उम्मीद नहीं है बोया का और वहाँ से हम लोग मैच निकाल लें. तो ये मेरे लिए एक मतलब हम सबके लिए एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर जो भी है, सबको वो एक मोमेंट, एपिक मोमेंट होता है. एपिक मोमेंट तो जरूर होता है, आई एम श्योर, बिकॉज व्हेन यू हैव नो एक्सपेक्टेशंस यार यहाँ पे मैच जीतेंगे और आप मैच जीते हो, तो आई एम श्योर दैट हैज टू बी अ वेरी यू नो मैं कहूँगा रिवॉर्डिंग मोमेंट, वेरी सैटिस्फाइंग मोमेंट. जो कंटेंट की फील होता है ना, फीलिंग ऑफ कंटेंट, जब आपको कुछ और नहीं चाहिए. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. यार अभी मुझे लगता है थोड़ा रैपिड फायर के साथ थोड़े मजे करने पड़े, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे भाई तो कुछ बोल नहीं रहे उनके बारे में, तो बात सब तो क्या ही बात है. बट ऑफ कोर्स आई वांट टू नो हाउ यू थिंक ऑफ योर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर टीममेट्स एंड हाउ यू डिस्क्राइब योर टीममेट्स इन वन वर्ड. तो सागर मैं आपसे शुरुआत करूंगा, एक एक करके मैं सारे प्लेयर्स का नाम लेने वाला हूं, आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे. बेकसूर है, पर जब बड़े हो गए ना तब देख के पता चला कि जेरी बेकसूर नहीं है.
जेरी है जो बार-बार मस्ती करते हैं, जो बार-बार उंगली करते हैं. Tom is the one who's actually, innocent. तो बात समझ लो अब. समझ रहा. यार इंद्रो, सागर. What do you think about Indro? अब इंद्रो इंद्रो इतना टाइम नहीं होगा, रैपिड फायर रैपिड फायर है. रैपिड फायर में सॉरी इतना सोच के नहीं होगा. इंद्रो है ना नहीं होगा. नहीं होगा. अब नहीं होगा. मतलब इतना टैलेंट छुपा हुआ है ना, एक वर्ड में समेट ही नहीं पा रहे. हाँ वही सब ये टैलेंट की बात है या वो जो बाइसेप पे टैटू दिख रहा है उसकी बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा. क्या वैसे टैटू किस चीज का है? हल्क कह सकते हैं हल्क टैटू है हल्क. ओके. और बेटर है. और मैसेज है जेरी ये तो टॉम जेरी है, ऐसा है क्या? अच्छा चलो यार, तो मैंने बोला पहले मैं इंद्रो के पास लास्ट जाऊंगा बिकॉज़ मुझे पता है इंद्रो विल हैव अ लॉट टू से. बट बारसो भाई आप बताओ, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ सागर? वन वर्ड. कैप्टन अमेरिका. कैप्टन अमेरिका. नहीं साहब, ये इंडिया तो और कैप्टन सिक्स सेंस. ये वाइब तो बिल्कुल नहीं आती है. जो डार्टी है ना उससे कैप्टन अमेरिका वाइब तो नहीं आती है. बट अरे यार नहीं. उसने भी तो लगा दी थी एंड गेम. अच्छा, एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर. इंद्रो के बारे में क्या कहेंगे? थॉर का हथौड़ा. और का थोड़ा एक ने हल्क बोल दे, एक ने थोड़ा बोल दे, मतलब आपको एक्चुअली इन कम्युनिटी में भी थॉर ऑफ इंडियन कम्युनिटी कहते हैं. कभी नोटिस एवेंजर्स बना के रखा है क्या यहाँ पे? मिस्टर जे को क्या कहोगे? अपने. मिस्टर जे को क्या लोकी कहोगे फिर? मैं नहीं बट एक्चुअली अगर आप सोचे तो लोकी बारसा बॉय लगते हैं ना. हाँ. हाँ वैसे देखा जाए तो हाँ, हाँ, देखा जाए तो देखा हाँ. जाए तो हाँ। शरारती भी वही है, वैसे बोल नहीं रहे अभी कुछ. बट मिस्टर जे के लिए क्या कहेंगे बारसा भाई? मिस्टर जय के लिए कह ही नहीं सकते उसके लिए तो. अरे ये देखो, अरे जैसे सागर और इंद्रो का है वैसे बारसा एंड जय का है, कह नहीं सकते कुछ भी. बट क्या ही करें. जय, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताइए एक एक वर्ड में आपको सारी टीमें से डिस्क्राइब करना, स्टार्टिंग विद इंद्रो. कुछ बचा ही नहीं इनको बोलने के लिए, सबको टाइटल दे दिए. अरे तो खुद का होगा, कुछ खुद का होगा. ब्रो भाई के लिए सोचना पड़ेगा, ये इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा अपना बहुत ज्यादा, क्योंकि सीरियसली रैपिड फायर एकदम दिमाग में जो पहला शब्द है. अच्छा चलो मैं कुछ पर्सनल पूछ लेता हूँ. चलो, व्हाट्स योर पेट पीव? कोई प्री मैच रिचुअल होता है आपका? नहीं ऐसा कुछ हाथ धोना, मुंह धोना, मतलब नहीं वैसा नहीं होता. हम नहीं. मैच शुरू होने वाले तो उससे पहले थोड़ा सा हम हाथ सेट करने के लिए, थोड़ा वार्म अप करने के लिए एक दो मैच ये सब जाते हैं खेलने और मुझे बस फोन करके लास्ट 2 मिनट पहले बोलते हैं आ जा. हम सब बैठे हैं. अच्छा, before we actually sign off, I want to ask you all one question, and I want to end it on a positive note for all the viewers. तो मैं एक एक करके I'll go from left to right. इंद्रो, जय, सागर and बारसा बॉय. मैं जानना चाहता हूँ यार, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? All the fans and supporters of Six Sense. आप क्या कहना चाहेंगे? इंद्रो पहले आप. अगर आप लोग भी हम लोग की तरह स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जितने भी छोटे छोटे ऑडियंस हो, पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लो और उसके बाद जो पूरा टाइम है वो अपने गेम में लगाओ. प्रैक्टिस करो, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, अच्छी स्क्वाड बिल्डअप करो और देन आप लोग भी स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हो. लेकिन आप सबसे पहले पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद स्पोर्ट्स में आओ और सक्सेस को सपोर्ट करो, प्यार दो. इंद्रो भाई की थोड़ी सी कंप्लीट करता हूँ बात को मैं. अगर टीम बिल्ड करनी है तो प्लेयर्स के टैलेंट के साथ उनका लक भी देख लेना कि उनका लक कैसा है, क्योंकि फ्री फायर के अंदर आपका 70 to 80% लक भी काम करता है बहुत ज्यादा. अगर उनका टैलेंट बहुत अच्छा है, वो 4 बंदों को मारने का दम रखता है बट तुम्हारे पास नहीं आ रहा ना, तो भाई वो बाहर लगे तुम्हारे लिए, उनकी जगह किसी और ऐसे प्लेयर को तो सिर्फ 2 को भी डाउन कर सकता है. सबकी टीम बहुत अच्छी बिल्ड होगी अगर आपके पास लकी प्लेयर्स रहेंगे तो. अपने बस सिक्स सेंस को तो मैं यहाँ जय के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा कि सिर्फ लक वाला बंदा नहीं चाहिए, कि वो तो लक तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो उसके अंदर पूरा तुम्हें जो खेलना है वो तुम सेंसिबली खेलो. ऐसा नहीं कि तुम्हें 4 बंदे दिख गए कि तुम जाके रश कर लिया, अंधाधुंध सब कुछ कैसे भी खेल लिया. थोड़ा सेंसिबली खेलोगे तो तुम्हारा गेम डेवलप होगा और तुम्हें गेम
का अच्छा सा नॉलेज आएगा और उसके ऊपर से तुम गिव अप कर दोगे वो नहीं चलेगा. I think that's a wonderful message, and that's a wonderful initiative that you guys are taking in terms of taking your own team forward. So I wish you guys all the best, and I hope कि आप आगे सारी tournaments में अच्छा perform करें, and of course in the finals as well, you guys do well and you guys win. So thanks so much guys, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमारे साथ जुड़ने के लिए. And उम्मीद करता हूँ कि और भी बातचीत जरूर होगी आप सबसे. But until the next time, I think that's going to be it from our side, ladies and gentlemen. जितने भी लोग देख रहे हैं यार, पहले जाके फ्री फायर की जितनी भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको जाके फॉलो करो, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, because well you do not want to miss out on all the videos that come out and all the esports episodes as well. But nonetheless, ladies and gentlemen, thank you so much for watching, and मिलते हैं अगली बार. But until the next time, it is going to be goodbye. Hi survivors, subscribe and press the bell icon for more awesome content. See you in the video. Initiate Operation Chrono. Play Free Fire now. Ha! Bang, bang, bang! Yee-haw! Pew, pew, pew! Huh? मैं तो हमारे नए स्टूडियो को देख रही थी, जिसे यहाँ बरम्यूडा में फिर से तैयार किया गया है. What's up, Free Fire? मैं हूँ आपकी होस्ट केली. वैसे तो आपको वो देखना नहीं चाहिए था, पर ये जरूर देखना चाहिए. वेक्टर अकिम्बो. वेक्टर हमारी पहली डुअल व्हील्डिंग गन है. हिप फायर बहुत दूर तक नहीं फैलती है, पर पास से मारने पर तबाही ही तबाही मचा देती है. हमें पता है कि रैंक मोड हर प्लेयर के लिए खास होते हैं. उनके लिए आपको खून, पसीना और आंसू बहाने पड़ते हैं. नए पैच में बीआर और सीएस मोड में एकदम नया रैंक्ड इंटरफेस होगा, जिससे आपकी ग्लोरी दिख सके. अपने मुख्य आंकड़ों को बेहतर तरीके से जांचें, अपने दोस्तों को अपनी नई रैंक दिखाएं और अपनी मेहनत के लिए नए सीजन के रिवॉर्ड्स पाएं. और हाँ, क्लैश स्क्वाड सीजन 4 में आप एक्सक्लूसिव स्किन गोल्डन P90 भी पा सकते हैं. जी जान से काम करो, जी जान से खेलो. केली का तो यही मोटो है, और ये साबित करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स में और अपग्रेड्स हैं. पेश है बरम्यूडा शेल्स. आप इन्हें पा सकते हैं शूटिंग आर्केड में खेलकर, दूसरे प्लेयर से बातचीत करके या कॉम्बैट जोन में झंडे गाड़कर. इन्हें इकट्ठा करें और इनके बदले में आपको मिलेंगे
फायरवर्क्स। फिर चाहे वो सेलिब्रेशन के लिए हो या थोड़े रोमांस के लिए, फायरवर्क्स हमेशा काम करते हैं। और जैसे ही हम नए साल की शुरुआत करेंगे, 2021 के पहले दिन पर फ्री फायर के पास सबके लिए एक सरप्राइज होगा। मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकती, पर आप इसके लिए तैयार रहिएगा। चलो मजाक बहुत हो गया। सच्चे प्लेयर्स को ये जानकर मजा आ जाएगा कि इस बार ग्लू वॉल ट्रेनिंग मोड भी ऐड किया जाएगा। ग्लू वॉल एक इन गेम इंस्ट्रूमेंटल आइटम है और इस पर महारत हासिल करने से आपके नाम में और बूया जुड़ जाएंगे। तो मैदान की ओर बढ़ो और ओह, क्या हुआ नन्ही बिल्ली? वो क्या है? Oh no! Ow! Ladies and gentlemen, welcome back to Free Fire Battle Arena Season 2. My name is Loki. Joining me for this one is going to be the man himself, Crips. Now, the fate of Group B has been decided. ES Iconic and TSG Army are going to be the teams who are going to take a ticket directly to the Grand Finals. But for Group A and Group C, their fates still hang in the balance. Who's going to make it to the Grand Finals? Well, that's what we're here to find out. And Crips, I want to get your thoughts on this. Who do you think we're going to see making it to the Grand Finals, at least from Group A? At least in Group A, I believe HTC Esports is definitely one of them. The other one, I can't be sure because the points difference in between those two teams is not that high. And so HTC Esports for sure. The second one, I really can't be sure because it all comes down to how these teams perform today. This is the last chance for them to qualify, and they need to give it their all. Yeah. Absolutely. And if they don't give it their all over here, they're going to have to go through the plains. And you've mentioned time and again before, plains is not the place you want to be. There's a lot of pressure on you. There's a lot of hard work that you need to do. And oftentimes you might end up revealing a strat that you probably have saved for, a higher stakes affair, probably something like the Grand Finals.
But yeah, the format is going to be in front of you, ladies and gentlemen, in case you're wondering what it's like. Today is the final day of the league day. The play-ins are going to happen on 16th and the grand finals on 18th. Now, before we proceed, I do want to mention that there is going to be a mystery reward that we unlock if we manage to hit 100,000 viewers during the day of the grand finals. But in order to hit 100,000 views during the grand finals, we first must hit 50,000 views today. That's right, folks. 50,000 views across each stream is going to make sure that we get to the second phase of that mystery gift unlock on the grand finals day. What is the mystery gift? Find out. So make sure you call everyone you know, friends, family, whoever, and get them to tune in to the Free Fire Battle Arena Season 2 stream. Yeah, I mean, there's a reason it's called the mystery gift, because it is a mystery. I mean, nobody knows for. But to be honest, this is the last chance for the teams to qualify, and as you can see over here, that only the top 6 teams will make it to the grand finals. That is, 2 teams from Group A, 2 teams from Group C will make it there, and the other 12 teams will have to go through the play-ins. How do you get to the top of the table? By scoring points. And by that, we look at the scoring table. If you win the Booyah, you get 20 points. If you come in second, you get 17. If you come in third, you get 15. So on and so forth, all the way down to 11th point. To the 11th place, I mean. And if you come in last, you get 0 points. But each kill gives you 2 points. So you're going to have to, work up a mix of decent number of kills and a decent number of place points as well, if you want to stand a chance of maximizing the total number of points that you get at the end of the day. Yeah. I'm just trying to imagine a world where a team doesn't finish off all the members from one particular team, gets like 3 kills from each team, and then ends up getting eliminated. And then they're on the last place, but they have like these plethora of kills. They have like 13, 14 kills to the name, but they get no placement points. That'd be pretty hilarious if that happened. But I don't think it will. It's kind of unlikely. Yeah, but guess what, Loki? Impossible things have happened in this tournament, and some really expected things also did not go according to plan. So you really can't put a pin on things. You really can't expect what's going to happen, and that's the beauty of Free Fire. Unpredictability is key in this game. But at the end of the day, the points that you get are not the only things that matter. Those points will be converted into league points, and that's what we're taking a look at over here. Let's say the top 2 teams from at the end of the day are from Group A. So the team 1 will get 20 points, team 2 will get 17 points. But because the third team that ends up, only for the sake of the example, if the third team that ends up is from Group B, they will still end up getting 20 points at the end of the day. So basically, all you have to do is stay ahead of the teams that are in your own group, and by doing so, you might just have a chance of getting into the finals. Keep in mind, there are mixed teams. There's teams from Group A as well, there's teams from Group C as well, but you just need to stay ahead of the teams who are in your group. So there's a little bit of rivalry over here. Absolutely. And I just want to clear something out for our viewers. So you can see in group number B that TSG Army and Assassin Clutch Gods are actually tied in terms of league points. So the way they determine which team will make it to the grand finals is through the placement points that they accumulated during the games itself. So based on that, TSG Army was ahead of Assassin Clutch Gods, and as a result, they're the ones who take the ticket to the grand finals and not Assassin Clutch Gods. They're going to have to duke it out in the play-ins, which are going to happen on the 16th of December. So stay tuned for that, folks. But before we get to the play-ins, we still have a very exciting day up ahead between Group A and Group C, where we're going to find out which teams from these groups are going to make it directly to the grand finals. Now, if history is going to repeat itself, if day 1 was any indication of what's to come, I believe we're definitely going to see XTZ Esports in the grand finals. Who's going to be on number 2? Well, you can't really put a finger on that. From Group C, however, there's a Team 4 Unknown, Team Little Bit of Swag, and Team Chaos that really stand out to me. But yesterday, even No Mercy and Unstoppable showed their true colors and showed that they were capable of a lot of great things. And I think they had multiple top 3, top 4 finishes. So definitely don't count them out either. But yes, the more experience you have, the better your chances are of making it to the finals. And XTZ, they're the prime example of that. Having been to an international land, their wealth of experience is it really tells a story here against some of these lesser experienced teams, some of the local teams, if you will. Your A1s, your Bilash armies. It's night and day sometimes. You can clearly see that XTZ, they take this game very, very seriously. They take this game so seriously that at one point it almost felt like they were smurfing. They felt like they were a bunch of gods amongst mortals, and that's the level of skill difference over here in between these teams. So that's really making a statement right here. They're a team that's competed at the continental level, so
an amateur tournament full of underdogs teams really shouldn't be that much of a problem for them. But for the other teams who are playing in this tournament, they have a lot of money to win. They have a lot of pride to gain. And to be honest, if I was in their shoes, I wouldn't be after all those materialistic desires. I would be after the scalps of the players of Team XTC Esports. Taking down a team of that caliber definitely will boost your confidence and give you some bragging rights as well. Absolutely. You know, there's a different kind of feeling that you have when in a game you know you would have won, but you were just so focused on killing one particular team that you went all out guns blazing. And even though you end up dying, it's like a victory in itself. You know, you managed to take out the number one team. You managed to take out some of the best players. It's a morale boost. It's a confidence booster. And it's confidence is something that these teams are going to need if they want to compete against the likes of XTZ. I know we've been singing up praises about XTZ, but some other teams in this league are also not to be underestimated. Now, we saw 4Unknown. We saw Team Little Bit of Swag, Team Unstoppable, No Mercy. In fact, almost all the contenders from Group C seem really, really polished, you know, to an extent. It seems that they're all giving up a tough fight, and they're not easily going to go down without... they're not going to go down without really, you know, taking some time and taking some kills off of these more well-established teams. Like, who was it in Group C? Team Chaos, yeah, there we go. Team Chaos was the one on my mind. I remember Tech K used to be a part of that roster. But unfortunately, I'm not sure if I remember seeing him in Team Chaos yesterday, though. I could be wrong. Might have forgotten about this. But I remember Pratham. I remember a couple of all these other players. And as Team Chaos, you really got to be feeling it. Because yesterday, they had so many chances to make it all the way to the top place. And at least in the games that I observed, I didn't see them make it to that you know, final spot. Get that booyah or even get that top 2 finish. Yeah, you're right. They did have some pretty good games, but they weren't able to close it out on a high note. Close, but no cigar. So basically, Team Chaos, even though they are a pretty well-established team, it's not enough. They need to drive it home. They need to send the ball out of the stadium and really secure that home run. And this is the home stretch. This is the final stretch. Last 6 games remaining for you to secure that spot in the grand finals. If not, then you're going to have to go through the acid test of the play-ins. Yeah, and that acid test, well, it's going to leave a mark, that's for sure. Several Good thing about several marks, yeah. If the acid breaks up into tiny pieces when you throw it and, you know, affects your entire body. Yeah, it just sizzles all over the place. But the good thing about making it through the playoffs is that if you do manage to make it to the grand finals, if you're one of the teams that actually makes it to the top 2 spot and gets themselves in the grand finals, the confidence has got to be high. You've played so many games, you've learned so many things, you've had the time to observe some of these other teams as well who've made it to the grand finals, and now you know exactly what you need to do or what you need to make up for in order to clinch that top spot and in order to clinch that lion's share of the 300,000 diamonds prize pool. But yeah, I mean, even then, like, it's a messy affair, you know, when only is it a sixth? I know you hate math, but I'm going to do some math regardless. And only a sixth of the teams from the plains actually make it to the grand finals. It's well, you really got to consider what your chances are. I think at that point your chances are close to somewhere around 17 to 20%. Like, statistically speaking, purely based on that, if you're in the plains, you only have a 17% chance to make it to the grand finals. Well, if you account for second place, you could say that there's a 34% chance. But regardless, that number tends to get lower and lower, and there are more and more games that you have to play in order to clinch that spot in the grand finals. But it seems that everything went over your head, Chris. You don't seem like the kind of person who's into math. You seem like the kind of person... Yeah, what are you into then? What would your strategy be? Okay, you're into art. Interesting. So do you look at Free Fire as an art? Yes, it's a form of art. The way you rotate, the way you move, the way you put those bullets made out of lead into human bodies made of flesh and bone and use it to create a masterpiece using only and only the blood of your enemies, and the ground is your canvas. That's the kind of art I believe in, Floki. That was too dark, that's grim. I think you need to see a therapist. Yeah, jokes aside though. Jokes aside, I do think that Free Fire is definitely a game where
you can just bring your own playstyle and make it work. Like if like we've talked about this before, it rewards whatever you like to do. So if you're the kind of person that likes getting a lot of kills, of course getting kills is something you can do. You can go and get as many kills as you want and get points based on that. But the issue becomes that when you are actually in the group stages, only your placement ends up mattering. So some of these teams, I think that realization, I'm not sure if I'm pretty sure it must have dawned on them. And as a result, teams, they don't really like to venture out and take as many risks as they would if this was a regular game, right? During the play-ins, during the grand finals, that's when we'll get to see what these teams are truly like. Group stages, it's still a trial run. It's still, just testing the waters with 1 feet and with 1 feet in. And as a result, you don't really get to see what these teams have prepared and what these teams have actually thought about before they enter the tournament. I know a lot of teams like to prepare specific strats, specific hot drops, specific ideas, and play around that. But hey, this is where I throw in a slight curveball. Let's say you're in this tournament and you're leading a team of 3 individually skilled players. How do you lead them to victory? How do you make sure you make it to the grand finals through these group stages? Do you just say, guys, head inside to the circle, we're going to stay there, we're going to camp it out, and we're going to try to get a top 2 finish every single time? Or do you say, you know what, let's go out, let's get some kills? Like, what's your jam? So, the classic moral dilemma. Points versus skill points. Here's the thing, Floki. I believe because there's 2 points per kill, I think teams should prioritize killing people. Now, this might be a little controversial, and this might go over your head a little because even it's in my head all over the place. The thing is, if you do win the Booyah, you get 20 points. Fair enough. Good amount of points, but then that can be covered up if you get 10 kills in a game. Now, it is difficult to hit 10 kills. But even if you hit like a marker of, let's say, 7 to 8 kills per game, you should be getting enough points consistently. Now, we had a team like TSG yesterday, right? They had the highest kill points, and they did not have enough placement points. But because of their kill points alone, they were able to put up a decent amount of overall points. And that got them through. The thing is, you can guarantee yourself 7 to 8 kills if you're consistent. But you cannot guarantee yourself the Booyah every time. You cannot guarantee yourself a top place finish every time. But you can guarantee the number of kills you get for yourself, because that is something in your control. No matter where the zone goes, if you pick up fights, you can pick up the kills. And that's a consistent way of giving yourself points. So, if I was in their shoes, I would focus on the kill points more. But here comes my curveball. In case of a tie, the placement points matter. Now what do you do? You've based your entire performance on kills, but then you're judged on the basis of placement points. So it's like a delicate balance. If you want to get ahead consistently, you need to rely on kills. And if you're relying on kills, then you get way ahead, right? You can't just like hang in there in between and hope that the tiebreaker comes in or something. Because if it goes for a tiebreaker, you will be judged on the basis of placement points, and that's when you're pretty much screwed. So it's a delicate balance. Absolutely, and the meta tends to shift, right, from the group stages to the play-ins and the grand finals. Over here, you're just vying for placement points, you're just trying to make sure that you get in to the top 4, top 3, guarantee your chances of getting a top 2 place finish in your particular group. But say if you actually aren't able to make it there, if you don't actually get those placement points, then you can't even make it to the play-ins, you can't even make it to the grand finals. I mean, you can make it to the play-ins, but then again, you have to slog through the play-ins, and then you can only make it to the grand finals. And that's kind of a precarious position to be in. I think as a result, what Free Fire really rewards is how fluid a team is. If you're rigid in your ways, if you're set in stone, if you think that you can just have a one-shoe-fits-all kind of strategy, and that's based around either placement or based around either getting a bunch of kills, you're not going to go very far. But the more nuanced and the more balanced your approach is, the further you'll get. If you balance out getting a high placement along with making sure that you at least hit a minimum threshold of kills every single time, you're going to have a good time. But if you just overly prioritize not taking fights, or if you overly prioritize taking as many kills as possible, well, you're going to suffer in the other direction. And so striking that balance is something that it's going to take a lot of time for these teams to learn as they start playing in these different formats, like during the group stages, during the play-ins, as well as the grand finals. And this is where things get interesting, right? Because usually in most games, you don't have this meta shifting trend where you play a particular sort of play style
which is completely revolving around something else that incentivizes one particular play style. I mean, the win condition in most other genres is quite binary. It's either you win or you lose. In battle arenas, it's a point-based system. So much like baseball, I'm not sure if any of our viewers are privy with that, but much like baseball or much like any of I'd say American football, those kind of games, they too over there prioritize getting league points over getting over actually winning the game. Now, what the exact system for that is, I'm not entirely sure, but yes, what the system rewards is consistency across multiple tournaments, across multiple matches. So you might just blow the door out completely in one tournament or like during one particular day, but if you can't keep that performance up, if you tend to lag behind during the other days, then it's going to come back to bite you. Definitely, it is going to come back to bite you if you do not have a balanced strategy. So you need to figure out what works best for you and focus on that. But in the process of doing so, not completely forget about the other aspects of the game. Well, ladies and gentlemen, we are going to be back after a short break. We were supposed to go live, but there are a little bit of technical hiccups that are bothering us for now. So we will fix them as soon as possible. And we'll be back with your lovely games in a little bit of time. So don't go anywhere. Hi survivors, subscribe and press the bell icon for more awesome content. See you in the next video. Initiate Operation Chrono. Play Free Fire now. Ha! Bang, bang, bang! Yee-haw! Pew, pew, pew! Huh? मैं तो हमारे नए स्टूडियो को देख रही थी, जिसे यहाँ बरम्यूडा में फिर से तैयार किया गया है। What's up, Free Fire? मैं हूँ आपकी होस्ट केली। वैसे तो आपको वो देखना नहीं चाहिए था, पर ये जरूर देखना चाहिए। वेक्टर अकिम्बो। वेक्टर हमारी पहली डुअल व्हील्डिंग गन है। हिप फायर बहुत दूर तक नहीं फैलती है, पर पास से मारने पर तबाही ही तबाही मचा देती है। हमें पता है कि रैंक मोड हर प्लेयर के लिए खास होते हैं। उनके लिए आपको खून, पसीना और आंसू बहाने पड़ते हैं। नए पैच में PR और CS मोड में एकदम नया रैंक्ड इंटरफेस होगा, जिससे आपकी ग्लोरी दिख सके। अपने मुख्य आंकड़ों को बेहतर तरीके से जांचें, अपने दोस्तों को अपनी नई रैंक दिखाएं और अपनी मेहनत के लिए नए सीजन के रिवॉर्ड्स पाएं। और हाँ, क्लैश स्क्वाड सीजन 4 में आप एक्सक्लूसिव स्किन गोल्डन P90 भी पा सकते हैं। जी जान से काम करो, जी जान से खेलो। केली का तो यही मोटो है और ये साबित करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स में और अपग्रेड्स हैं। पेश है बरम्यूडा शेल्स। आप इन्हें पा सकते हैं शूटिंग आर्केड में खेलकर, दूसरे प्लेयर से बातचीत करके या कॉम्बैट जोन में झंडे गाड़कर। इन्हें इकट्ठा करें और इनके बदले में आपको मिलेंगे फायरवर्क्स।
फिर चाहे वो सेलिब्रेशन के लिए हो या थोड़े रोमांस के लिए, फायरवर्क्स हमेशा काम करते हैं। और जैसे ही हम नए साल की शुरुआत करेंगे, 2021 के पहले दिन पर फ्री फायर के पास सबके लिए एक सरप्राइज होगा। मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकती, पर आप इसके लिए तैयार रहिएगा। चलो मजाक बहुत हो गया। सच्चे प्लेयर्स को ये जानकर मजा आ जाएगा कि इस बार ग्लू वॉल ट्रेनिंग मोड भी ऐड किया जाएगा। ग्लू वॉल एक इन गेम इंस्ट्रूमेंटल आइटम है और इस पर महारत हासिल करने से आपके नाम में और बूया जुड़ जाएंगे। तो मैदान की ओर बढ़ो और ओह, क्या हुआ नन्ही बिल्ली? वो क्या है? ओह नो! Hi survivors, subscribe for more awesome content. See you in the next video.